Hello students, continuing with practice set 3.4, sum number 4. Here a diagram is given to us and we are supposed to prove that measure angle RTS, join RT and TS. RTS is an acute angle. We are supposed to find RTS is an acute angle. Now, before starting the proof, just write down. You have to write that join RT such that R dash M dash T, take a point M, RT intersects the circle in point M such that R dash M dash T, right? RT intersects the circle in point M such that R dash M dash T and join TS and join MS. लिखो ऐसा, join MS, ऐसा लिखो, join MS. लिखा? चले अभी चलते हैं. चलो. Now this angle, measure angle RMS is a right angle. I will write sec RS is a diameter. RS is a diameter. That means RS is a semicircle, RMS is a semicircle. अरे समझ में आ रहा है ना? A diameter divides a circle into two parts. ये diameter है ना, तो आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट ऊपर है. अरे बराबर ना? तो ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है. प्रॉपर्टी है एंगल formed in a semicircle is a right angle. जो एंगल सेमी सर्कल में फॉर्म होता है ना, वो राइट एंगल होता है. Therefore, measure angle RMS is equal to 90. RMS क्या है? 90, बिकॉज वो सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ है. सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ है. That means RMS is 90. Angle RMS is 90. Okay? चलो. Therefore, measure angle TMS is equal to 90. तो ये भी 90 रहेगा. Why? Linear pair angles. So अगर this is 90, so this also will be 90. Okay? So in triangle TMS, measure angle TMS plus measure angle MTS plus measure angle TSM is equal to 180. Sum of measures of all angles of triangle. Okay, so this is 90 plus measure angle MTS plus measure angle TSM is equal to 180. 90 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस. तो मेजर एंगल MTS plus measure angle TSM is equal to 180 minus 90 is 90. Angle MTS can be written as RTS. Same angles with different names. Angle MTS can be written as RTS. So I'll write that is measure angle RTS plus measure angle TSM is equal to 90. Is equal to 90. RTS plus TSM, TSM, ये दोनों एंगल का टोटल 90. इसका मतलब this angle and this angle, the total sums up to 90. And out of these two angles, both the angles will be acute angles. दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे तो ही तो टोटल 90 होगा ना. जीरो तो नहीं हो सकता एंगल. समझ में आ रहा है क्या? तो ये दोनों एंगल का टोटल 90 है. इसका मतलब ये दोनों एंगल जो है ये 90 से छोटे हैं. दैट इज मेजर एंगल RTS is less than 90 degrees. बराबर है क्या? ये प्लस ये is 90.
दैट इज मेजर एंगल आरटीएस 90 से छोटा ही रहेगा, तो ही दोनों ऐड होकर 90 होता है, तो आरटीएस विल बी लेस देन 90 एंड देयरफॉर आरटीएस इज एन एक्यूट एंगल. इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 says that to prove that any rectangle is a cyclic quadrilateral, so it is given that quadrilateral ABCD is a rectangle. To prove that quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. Proof. Quadrilateral ABCD is rectangle. Reason given. Therefore, measure angle A is equal to measure angle B is equal to measure angle C is equal to measure angle D is equal to 90 degrees. Why? Angles of rectangle. सब angles rectangle के 90. अरे बराबर. ओके, देखो ना, ऑपोजिट एंगल्स देखो. मेजर एंगल A plus measure angle C is equal to 90 plus 90 is equal to 180. Therefore measure angle A plus measure angle C कितना होता है? 180. If opposite angles of any quadrilateral are supplementary, then the quadrilateral becomes a cyclic quadrilateral. If opposite angles of a quadrilateral are supplementary, then quadrilateral ABCD becomes a cyclic quadrilateral. Easy. This is the next question. We are supposed to prove that WZPT is cyclic quadrilateral. WZPT in quadrilateral WZPT, measure angle WZP is equal to 90. Measure angle WTP is equal to 90. Actually दिया हुआ है, चाहिए तो लिख दो लीनियर पैरेलल्स, बट दिया हुआ है ना 90 परपेंडिकुलर दिया हुआ है. नाउ सी WZPT ऑपोजिट एंगल्स का टोटल देखो ना, कितना है? 180 है ना. सो मेजर एंगल WZP plus measure angle WTP is equal to 90 plus 90 is equal to 180. अरे बराबर. Therefore, opposite angles of quadrilateral WZPT are supplementary. Therefore, quadrilateral WZPT is a cyclic quadrilateral. इजी था पहला इजी था. दूसरा वाला सीखते हैं. चलो, पहला क्लियर हो गया ना, अभी आगे चलते हैं. Now, the second one, we are supposed to prove that X, Z, T, Y are concyclic. Concyclic means they are lying on the circle. They are vertices of cyclic quadrilateral. Concyclic मतलब concyclic, ऐसा concyclic. So these points are concyclic. Concyclic मतलब सर्कल के ऊपर रहने वाले. Now there is a property. If two points on a given line, if two points on a given line subtend, they subtend, ये भी और ये भी subtend करता है ना, subtend equal angles at two distinct points on the same side of the line. ये लाइन के इस साइड ये दोनों पॉइंट दो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं. देन
points are said to be concyclic, then those points are said to be concyclic. Once again, if two distinct points on a given line subtend equal angles on the same side of the given line, then those 4 points are said to be concyclic. अरे समझ में आ रहा है? So this is what you have to by heart or understand. Whatever you do, you by heart this line or you understand that if 2 points on given line subtend equal angles at 2 distinct points on the same side, then those 4 points are said to be concyclic. They are said to be what? Concyclic. That means seg xy subtend angle xzy and angle xty which are equal. Therefore points x, z, t and y are said to be concyclic. Hope this is clear. This is very important line. This is very important. And then you have to write that this is xy and this is subtending equal angles. So these 4 points are said to be concyclic. Okay. Second last question of today's lecture. We are supposed to find angle NMS or EMF, whatever. Now the property is when the angle is formed in the exterior of circle. So the vertex of angle NMF lies in the exterior of circle. Therefore, measure angle NMF or NMS is equal to half the difference of arcs intercepted by it. मतलब अगर एक एंगल सर्कल के बाहर फॉर्म होता है तो वो 2 खून करता है, एक बड़ा और एक छोटा. दैट मींस मेजर एंगल NMF इज इक्वल टू हाफ. याद रखने का, बाहर बनता है तो माइनस करना है, हाफ करके माइनस करना है. अंदर बनता है तो हाफ करके ऐड करना है. तो अब इधर माइनस करना है, बड़ा माइनस छोटा. हाफ मेजर आर्क NS minus measure arc EF. So it will be half 125 minus 37. So half into 88, that is 44 degrees. Easy गया. बाहर बन गया ना तो हाफ माइनस करने का, बाहर बन गया ना हाफ माइनस करने का. माइनस करो हाफ करो, माइनस करो हाफ करो. The last question of today's video is measure arc BC. You are supposed to find measure arc BC. Now इसके पहले वाले सम में I explained you all when the angle is formed in the exterior, but here the angle ABCE is formed in the interior. Now what happens when an angle is formed in the interior? See, interior ना अंदर बन गया ना, that means it is intercepting 2 arcs. एक तो वो जो उसने काटा है, देखो ना उसने खून किया है, एक आर्क A है, और एक वो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में खून किया है. दैट मींस देयर आर 2 आर्क्स इंटरसेप्टेड बाय एंगल ABE. One is arc AE, other is arc BC. So I will write measure angle ABE. Angle ABE is formed in the interior of the circle. If it is formed in the interior of circle, therefore measure angle ABE will be equal to half the sum of arc intercepted by it and the angle vertically opposite to it. That means अगर बाहर बन गया था तो हाफ माइनस माइनस, अंदर बन गया तो हाफ प्लस प्लस, हाफ प्लस प्लस.
हाफ प्लस प्लस, हाफ प्लस प्लस, बाहर हाफ माइनस माइनस, माइनस माइनस, अंदर बन गया तो प्लस प्लस। द सम बोला है, देखो ना सम, तो मेजर आर्क AE प्लस मेजर आर्क BC, ये कितना डिग्री दिया है 108 डिग्री, सो टू नीचे तो इधर कुछ 216 इज इक्वल टू AE कितना है 95, ये कितना है नहीं मालूम है, तो माइनस करो 95 को, तो मेजर आर्क BC विल बी इक्वल टू 121 डिग्री, माइनस करेंगे तो इतना है। ओके डन।